Hello everyone, today we'll start class 9th chapter lines and angles. तो इसमें the first concept is about parallel line. What are parallel lines? Two lines AB and A dash B are said to be parallel if they never intersect each other. If they never intersect each other, have finite distance between each point, or distance between any two points are equal. That means distance between PQ and RS are equal. It is parallel if PQ is equals to RS and AB and A dash B never intersect each other. Okay. Now, second is transversal. What is it? Transversal? A line, ये एक ऐसा लाइन होता है जो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है. A line which intersects a parallel line is known as transversal. Okay, note it down. Now talking about angles, there are lot of angles to deal with in class 9th. Now first is complementary angles. Complementary angles. Now what is this? When two angles give sum as 90 degree. जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, they are termed as complementary angles, like for example 60 degree and 30 degree. Okay. Second is supplementary angles. What are they? When sum of two angles is 180 degree, like for example 100 degree and 80 degree. Okay, note it down. Third is vertically opposite angles. Vertically opposite angles, they are formed when two lines intersect each other. They are formed when two lines intersect each other. Then this opposite pair are equal to one another. Like for example, if this is 60 degree, this also is 60 degree. If this is 120 degree, this is also 120 degree. Okay.
Note it down. Now fourth is linear pair. What are they? Let us take a line AB which has a ray lying on it whose name is OP. Let us take a line AB और इस लाइन पे एक रे है OP. Then these two adjacent angles, one and two, forms a linear pair whose sum is equals to 180 degree. Linear pair when the sum of two adjacent angles lying on a line is 180 degree. Okay, note it down. Like for example, we have a question. We have to find the value of B. Now for this is a straight line and these two are rays. So this forms linear pair. So on solving it, we get B plus 8 plus B minus 28 is equals to 180 degree. So this is 2B minus 20 is equals to 180. 2B is equals to 200. B is equals to 100 degree. Okay, note it down. Now before moving further, we will prove the vertically opposite angles property. So we'll prove that vertically opposite angles are equal when two lines intersect. Prove that vertically opposite angles are equal when two lines intersect. So we have done linear pair, we know how to apply it. So this is AB, this is PQ, okay, and this is point O. We have to show that we have to prove that angle 1 is equals to angle 2, right? So for doing this, we will take angle 3. Now AB is a line. AB is a line, so I can say that angle 1 plus angle 3 is equals to 180. Highly important to note it down. Okay. If AB is a line, then I can say that angle 3 plus angle 1 equals 180 linear pair. Similarly, PQ is a line, so I can say angle 2 plus angle 3 is equals to 180 linear pair. This is first equation, this is second equation. On using 1 into, we get 3 is terminated. So we get angle 1 equals to angle 2, hence proved. Okay, note it down.
No, next angles are formed by two parallel lines. Highly important, note it down. Let A be parallel to PM and let Rn intersect these two parallel lines at S and W. So there are some equal angles forming between these two parallel lines. Now first of them is alternate interior angles. Note it down. Alternate interior angles, ये Z की शेप में होता है, ये Z की शेप में होता है, और ये जो कॉर्नर है, इस पॉइंट पर जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है. यानी कि दिस एंगल 1 is equals to angle 2, this angle 3 is equals to angle 4. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल. रीजन alternate interior angles. Okay. Now second one is corresponding angles. Second is corresponding angles. This makes a reverse F. ये F का उल्टा शेप बनाते हैं और यहाँ टॉप पे और यहाँ बॉटम में जो एंगल होता है दे आर इक्वल. नोट द शेप एंड द नेम ऑफ द एंगल. इसका शेप विल बी लाइक समवट लाइक अ रिवर्स एफ, उल्टा एफ. और इसमें जो ये टॉप और बॉटम वाले एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे बाय corresponding angle property. So if I make angle 4 here, so I can say angle 2 is equals to angle 4. Why? Corresponding angles. ठीक है, note it down. इसके बाद है co-interior angles. इसमें क्या होता है? Two angles lying on the transversal. When two angles lie inside the transversal, they form a supplementary pair, and इसी को हम बोलते हैं co-interior angles. जब दो लाइन ट्रांसवर्सल के ऊपर में लाई करें, पैरेलल लाइंस के अंदर लाई करें, तो उनका सम 180 होता है. ओके, नोट इट डाउन. Now this was some key terms. I will do some numericals on it. उससे पहले कुछ बेसिक एंगल्स like acute angle. What is this? Angle lying between 0 to 90 degree. Okay. Second is obtuse angle. Angle lying between 90 and 180 degree. Third, reflex angle. Angle lying between 180 and 360 degree. And this we know very well that right angle measures 90 degree. ठीक है.
This is right angle. This is right angle. Okay, note it down. So the first question is, if PR is parallel to DS is parallel to MN, find X and Y. If PR is parallel to DS is parallel to MN, find X and Y. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज्ड. यहाँ पे ऑल्टरनेट बन रहा है, बट सिंस y and x both are unknown, I cannot use the property of alternative correctly. But here this ds is parallel to mn. ds mn के पैरेलल है, so 161 प्लस x की वैल्यू 180 हो जाएगी, को इंटीरियर एंगल, राइट. तो फिर यहाँ से वैल्यू ऑफ x 19 आ जाएगा. ठीक है. अगेन नाउ दिस x is 19. This angle is equal to this angle. Alternate 62 is equals to x plus y, alternate angle. So we can say 19 plus y is equal to 62. So y is equals to 62 minus 19 is equals to 43 degree. So y is 43 degree. Okay, note it down. Next is if PR is parallel to MN, find X. If PR is parallel to MN, find X. तो यहाँ पे इस PR और MN में कोरिलेशन है, दिस पैरेलल, लेकिन इन दोनों में कोरिलेशन नहीं है. तुम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस अ लाइन OS, ड्रॉ OS पैरेलल टू PR पैरेलल टू MN. ठीक है.
तो फिर जब ये लाइन प्रोड्यूस हुई OS, तो यहाँ पे अगर हम एंगल 1 ले लें, देन आई कैन सी दैट इन दोनों में एक रिलेशन है, दे आर को इंटीरियर। तो 138 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स 180, सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 138, सो एंगल 1 की वैल्यू यहाँ से 42 डिग्री आ गई। ठीक है, दिस इज 42 डिग्री। नाउ दिस PR इज ऑल्सो पैरेलल टू OS, सो ये जो एंगल है ये Z बना रहा है, सो आई कैन से दैट एंगल X प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 162 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो 1 तो 42 डिग्री है, तो X प्लस 42 डिग्री इज इक्वल्स टू 162, तो यहाँ से वैल्यू ऑफ X 162 माइनस 42 120 डिग्री आ जाएगी। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, here the question is, if AB is parallel to M dash N dash, then find the value of X and Y. ओके, X और Y निकालना है, AB और M dash N dash पैरेलल है। तो इस ट्रिक को देखने के बाद यहाँ M dash N dash और RS, M dash N dash एंड RS इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो जो ये वर्टिकल पेयर है वो तो इक्वल हो जाएगा, राइट? यानी कि आई कैन से दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू 58 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो हमारा इसमें एंगल 1 है वो 58 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट बना रहा है, एंड यहां से ये Z भी बना रहा है। दिस इज द Z that we can see, so 102 plus angle Y is equals to angle 1 Y, alternate interior angles, तो क्योंकि वो alternate interior angle है, then we get 102 plus Y, 102
प्लस वाई, तो इस एंगल को चेंज करते हैं, दिस इज 28 डिग्री, सो 28 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल्स टू एंगल 1, alternate angle, ओके। सो 28 प्लस वाई 58 हो गया, तो y की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। y कितना आ गया? 30 डिग्री, ठीक है। यहां से हम एंगल 2 भी निकाल सकते हैं। आर ऐसे एक लाइन है, आर ऐसे एक लाइन है, तो 58 प्लस 42 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा बाय स्ट्रेट लाइन एक्सियम। कितना हुआ? 100 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180, सो एंगल 2 की वैल्यू 80 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x, सिर्फ x निकालना रह गया। ये ट्राइंगल है ई एन एम, इस ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ई एन एम, we can say that angle x plus angle 2 plus angle y is equals to 180। ऐसा क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्राइंगल में तीन एंगल को जोड़ के हमेशा 180 आता है, तो x निकालना है, एंगल 2 80 डिग्री का है और एंगल 1 30 डिग्री का है, इज इक्वल्स टू 180 हो गया। सो वी से एंगल x प्लस 110 इज इक्वल्स टू 180, सो एंगल x की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी, ओके। नोट इट डाउन।